you are watching the visuals from second vehicle assembly building, where the full LVM-3M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Each S200 has got 3 segments called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टब-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है, और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफ़ी सुधार किए गए हैं। 58 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है, और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। सभी परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात इस समुच्चय को पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है, और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। पूर्णतः तैयार LVM-3M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। और इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है, और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहाँ से पूरी की जाएगी। पूर्ण संयोजित और तैयार LVM-3M4 रॉकेट। आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहाँ संपन्न किया जाता है। LVM-3M4 rocket standing majestically against a picturesque background, the second launch pad. LVM-3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions.
mission executives on your screen. That's the spacecraft director, associate spacecraft director. ఇప్పుడు 2:30కి గిమ్మని లేచింది చెప్పలేము దాని మీద వెళ్తాం LBM-3 is India's largest and heaviest launch vehicle, ferrying Indian and international customer satellites. వెంటనే అరగంటలో వెళ్ళిపోతారు ముందు చూస్తారా దిగేదాకా చూస్తారా ల్యాండ్ అవ్వచ్చు అది 3 రోజులు 4 రోజులు పనిచేసి 14 రోజులు పనిచేస్తుంది రోవర్ దించుతారు వెంటనే కాసేపు ఆగి అది దిగానని చెప్పి మెసేజ్ పంపించింది మెసేజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో వీళ్ళు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తారు డోర్ ఓపెన్ చేసి దిగమంటే ల్యాండర్ దిగమని ఆ తర్వాత దాని రోజు మిషన్ ఒకటి దిగి ఆ లేజర్తో భూమి అక్కడ భూమి టెస్టింగ్ ఆవిరిలో ఉందా ఐదు రూపంలో ఉందా డస్ట్ రూపంలో ఉంది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారు తెలుసుకొని అప్పుడు అక్కడ మనిషి ఉండడానికి ఉందా లేదా అక్కడ ల్యాబ్ టెస్టులు అన్నీ చేస్తారు ఇక్కడ టెస్టింగ్ చేయరు అక్కడ టెస్టింగ్ చేయరు కదా అక్కడ గ్రావిటీ తక్కువ కదా ఎవరైనా ఇది వచ్చి మునిగిపోతే అక్కడికి వెళ్ళి దాంట్లో మనం కూడా prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LBM-3 M4 Chandrayaan 3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time today, the 4th July 2023 from second launch pad of SDSC Sharp. All stations to know, Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On your screens, you have just watched Mission Director Shri S. Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating teams for range, launch vehicles, spacecraft tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard Roger. computers. VLCC2, LCC2 to not. व्यूअर्स गैलरी दर्शकों से खचाखच भरी हुई। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। Enthusiastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Center Launch View Gallery for witnessing this historic moment of Chandrayaan 3 launch. The countdown for LBM-3 for Chandrayaan 3 mission has lasted for 25.5 hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. During countdown, the launch vehicle stages are serviced with propellants. Gas bottles meant for stage operations are charged, while the Earth storable propellant filling was concluded more than 16 hours ago. The cryogenic propellants अभी कंफर्म किया गया है। व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LBM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। we are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video
on this mission. to confirm supply of PM2 to Gaya. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragya. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms, Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the 4th instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser perspective. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. ఉండదు అదొక
లంక టైప్లో ఉంటుంది. అంటే సముద్రం పడిపోద్ది. आपके सामने ఆ? సముద్రం అవతల అంతా ఈ ఇల్లులు ఉండవు. ఇల్లు వస్తే आपने ఇటు. देखा అందుకే సముద్రం చివరిలో పెడుతుంది. इसमें एनिमेशन की मदद से इस మనకి पूरे అది లక్ష్యం मिशन ఇండియాకి. की यात्रा को बनाया गया है. వరల్డ్ ప్రకారం చూస్తే అనువైన ప్రాంతం అది. ఆల్టిట్యూడ్ తక్కువ, ఆల్టిట్యూడ్ Chandrayaan 3 has two predecessors with destination known as their mission objective. Chandrayaan 1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan 2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा. संक्षेप में यह इस प्रकार है. सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा. वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी. फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा. चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा. फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा. यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल. प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है. ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन लगे हुए हैं. इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. About the major milestones in the journey of Chandrayaan 3 to the moon. The spacecraft consists of propulsion module, lander and rover. Lander is planned to touch down at the south pole of moon. Major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase. As the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its 6th phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as 7th phase, and then the most awaited landing phase takes place. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य. सभी सेंटर डायरेक्टर्स ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్, ఆర్కే फूड्स. देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है. दर्शक दीर्घा भी इस इंतज़ार पे. प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं. హెచ్డీవీలో చేస్తారు సాయి గారు.
ఆయన Most నేను of ఇక్కడ you might recall the Chandrayaan ఇక్కడే 2 mission అపార్ట్మెంట్ దగ్గర and the intense moments when అపార్ట్మెంట్ దగ్గర సార్ ఇక్కడ all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of the moon. బ్యాక్ సైడ్ కన్వెన్షన్ బ్యాక్ సైడ్ అపార్ట్మెంట్ అల్లాడిపోతాడు రోజు ఐ మిస్ యూ అన్న The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. కూర్చుంటారు ఇక్కడ చూశాను ఏంటి భయ్యా ఇక్కడ ఉన్నాను భయ్యా నువ్వు బండి వేసుకు రాలేదా అండి నువ్వు బండి पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। సరే ఇలా పట్టుకో मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। నేనేం చేయను గారు We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. 3 minutes 52 seconds 3 minutes 54 seconds Gaining from the heritage of Chandrayaan, పైలెత్తాన్నా తీసుకో ఇప్పుడు the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. లేట్ అయింది ఏమనుకో బాగా చాలా అయిపోయింది ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। అడ్వాన్స్ అని ఇస్తారా నా దగ్గర ఏం లేవు कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन ఎక్స్ప్రెస్ టేక్ అదే और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। minus 3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। చెప్పు ఇంతకు వచ్చి బుక్ చేసుకున్నాం కదా ట్యాగ్లో పెట్టేసుకున్నా प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। 10 పాయింట్ దాంట్లో నీళ్ళు S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा। ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। और अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर फोर्टीन मेंबर्स వాళ్ళు సాయి వాళ్ళు రాలేదు నేను బిర్యానీ చేస్తాను Minus 40 seconds. Minus 30 seconds. 30 సెకండ్స్ పెడుతుంది Minus 30 seconds. లేదు సార్ Minus 22 seconds. L110 Minus 20 seconds. Minus 15. 10 seconds 9, 8, ఇగ్నిషన్ 7, స్టార్ట్ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. స్టార్ట్ అయింది
Plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hyperbolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. यहाँ पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes.
Front stage thrust cut off and separated. C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is low. Performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. ఇది తమ గురించి యాక్టివేట్ అయిపోతుంది వచ్చే పరిసర బాగా ఫోటో యాక్చువల్ ల్యాండ్ యాక్చువల్ Rio stage performance normal. पेलोड के बारे में जानकारी। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టినా మేడం మీకు 10 days రాలేదు స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టాను మేడం India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landway probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 3 भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में अमित भारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह
अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की ऊबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नौभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to drive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on our surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrading the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. Engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. మేము అప్పుడు ఇదే సేమ్ ఓపెనింగ్ అప్పుడే ఇక్కడ లాస్ట్ అవర్స్లో ట్రైనింగ్ అయ్యాము. లాస్ట్ అవర్స్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఓపెనింగ్ అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెనింగ్ इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। మేడం ఉండేది, अभिवृद्धि प्राप्त कर మేడం ఉండేది. चंद्रयान 3 కరోనా టైంలో यहाँ పంపించేసి से చాలా पृथक कर दिया जाएगा। అవును సురేష్ అవును హైట్ चंद्रयान 3 को LVN 3M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में మరి दारुణంగా పంపించారు. लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी इंटीमेशन है, 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। कलेक्शंस वगैरह అది సాయి సార్ 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और आवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक
करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। గుంటూరులోనే అక్కడ మెస్ ఓపెన్ చేశారు. We have come గుంటూరులో close to మెస్ 900 ఓపెన్ seconds చేశారు కాలేజ్. after the launch. వెళ్ళాం Currently, the C-25 stage is thrusting. ఇంకా రన్ చేస్తుంది. సార్ టచ్లోనే ఉంటారు. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. ఏజ్ ప్రాబ్లం ఒకటి कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है మాకేంటి ఫస్ట్ మేడం और వచ్చి చేసేది కాదు. उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिव्यक्ति प्राप्त होते ही चंद्रयान తర్వాత 3 को సతీష్ సార్ వచ్చాక బిజినెస్ అయింది. प्रक्षेपित कर అయ్యే दिया కొద్ది Trio stage, thrust cut off. Satellite injection condition is achieved. తర్వాత अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. Mission director, the LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Thank you. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India.